बताइए. this last thing m1 into m2 equals to -1. Yeah, So आपको how? I can't give you the proof of this. No, I told you earlier that there is no how in this because it's the formula of tan A plus B. I'm just showing you what the formula we use here is. You have not learned this formula yet, right? Okay. So I said there is no how for this question for you. आपको इसको ऐसा ही ले लेना चाहिए as it is coming out. Okay. Okay, sir. Excuse me, sir. Yeah. Sir, please can you tell again कि how can a slope be a positive at 2 times being acute and obtuse? What? सर जो आपने बताया था कि स्लोप पॉजिटिव हो सकता है जब उसका एंगल एक्यूट हो और ऑब्ट्यूज हो. नहीं, आपने गलत सुना. You are fighting for the सर cooler. नो सर क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी. प्लीज बता दिए. Okay, let's say. मैंने ये कहा था बच्चों आपसे. Let me find the page. If I get. Yeah, page number. I think this page number. No? Yeah, this page number I told you. Yeah, this is written here. Take here. I told you that slope is positive or slope is negative in two cases. Now, slope is positive when either theta is acute in the anti-clockwise direction, like here, and it is obtuse in the anti-clockwise direction, like Anti-clockwise. तो ये दोनों ही केस में बेसिकली स्लोप कैसा बनेगा? पॉजिटिव स्लोप बनेगा बिकॉज इट द एक्यूट है इस केस में, है ना? While when angle is obtuse in the anti-clockwise direction and acute in the clockwise direction, तो आपके पास कंडीशन ये है कि आप दोनों में से एक याद कर लीजिए. So remember the first condition, these two conditions. बस इनसे ही काम चला लीजिए अपना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लर्न करने में. दैट जब हमारा एंगल एक्यूट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ऑब्ट्यूज है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक में हमारा स्लोप नेगेटिव और एक में हमारा स्लोप पॉजिटिव. अंडरस्टैंड? Yes, sir. बोलिए मारूफ. यस सर. राइट. एनीवन एल्स विद अदर डाउट? बोलिए बच्चों. Anyone else with any other doubt till there? No? Nothing? Nothing? Sure I should move ahead? Yes sir. Fine. Yes, sir. Fine. So now I'm taking to the next topic. The next topic is here. The next topic is how to find a slope of a line whose inclination is not known to us. So now I take up to the case where we have 2 points passing of a line x1 y1 and x2 y2. So and again I'm not the proof of this question because I tell you what, अब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं लाइन के, पासिंग पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और मुझको लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है. So I told you that time slope is basically change in ordinate and change in abscissa. change in abscissa. Change in abscissa. Right. That gives you y2 minus y1 upon x2 minus x1. So you can say difference of ordinate
upon difference of abscissa. That would give you the value of slope of a line. इससे आपके पास लाइन का स्लोप आ जाता है. क्लियर है इतनी बार सबको? That's the easiest way. Yes, sir. The easiest way of finding the slope of a line. y2 minus y1 upon x minus x1. लाइन के दो पासिंग पॉइंट पता होने पर हमको तुरंत उसका स्लोप निकालना. There is no problem taking y2 and y1 different. You can take any point as y1 x1 y1 and any other as x2 y2. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? So it is simply, don't think कि AB का slope different है और BA का slope different है. It don't make any difference to us. You can take it both ways. So y2 minus y1 upon x2 minus x1 is the slope of a line whose two passing points are known to us. कौन इतनी बात समझ गया? Yes, sir. Yes, Right. sir. Sir. Right. Yes, sir. Okay, Yes. fine. Now, somebody asked me why it is tan theta and tan alpha equals to -1. Let me explain you how it is. Let me explain you why those lines which are perpendicular, उनके slope का product -1 equal होता है. इसका क्या basic concept है? इसका क्या basic reason है? So parallelism, I show you why lines are parallel and all. अब मैं बात करता हूँ बच्चों केवल perpendicular lines की. Talking about the perpendicular lines. What are the perpendicular lines and what they do here? So suppose I make a axis. For example, this one line, this second line, this y-axis, this is x-axis, this origin, right? This angle is alpha and this angle is theta. B here, C here. I hope you understand. A and this is B. And lines are perpendicular. Okay. Now for this line AB, say inclination is how much? Alpha. The slope equals to 10 alpha. Right. For line CD, tell me what is the inclination? Theta. 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 The beta. So theta, this angle. Okay. So slope is how much? Tan theta. Tan theta. Tan theta. Now the other point. And थीटा में और अल्फा में क्या रिलेशन होगा? थीटा क्या है? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, राइट? सो थीटा कितना होगा बच्चों? 90 plus alpha. Theta is 90 plus alpha. Plus alpha. Right. But I find slopes Yes, here. sir. तो ये m1 मान लीजिए, ये m2 मान लीजिए. So what is m1 equals to? What is m1 equals to? m1 equals to Tan alpha. and alpha. 10 alpha. Tan Tan alpha. What is m2 equals to? 10 90. And And 90 plus alpha. Because second angle is 90 plus theta, right? Now tell me, what is 10 90 plus theta का formula? You have not learned that. So understand that 10 90 minus theta is cot theta. अब ये पढ़ चुके हैं मुझे formula. Yes, sir. Yes, sir. 10 90 minus alpha अगर लिखा होता यहाँ पर तो ये cot alpha है. But I just told you when angle goes in the second quadrant, so it is 10 90 minus and 90 plus alpha. Angle goes in the second quadrant. Angle becomes obtuse. The value of tangent becomes negative. It is minus cot. It is minus
cot alpha. Okay, Yes, sir. कितना है? Yes, sir. माइनस cot alpha के बराबर है. अब so what is cot? I got जो यहाँ कर रहा हूँ उसको. What I've got m2 equals to minus cot alpha. That means m2 equals to 1 upon 10 alpha, right? So m2 equals to minus 1 upon m1, because what is 10 alpha equals to? ये तो m1 है, M1. तो हमने यहाँ पर m1 को पुट कर दिया. What I got? m1 into m2 equal to minus 1. The second relation is when lines are perpendicular to each other, they got right. You got m1 dot m2 equals to minus 1 when lines are perpendicular to each other, and when they're equal, when angles are equal, the lines are parallel to each other. Lines are The parallel two to each other. conditions for perpendicularity of two lines. All right. Is that clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, fine. So I take you to one more last point here. I'll take questions tomorrow. आपका पूरा concept पढ़ा देता हूँ इसका. हमने पूरा किया है almost. And then we'll go on to do questions tomorrow onward. For the exercise, I'll give you some homework in this. फिर हम बाकी काम कल करेंगे. Right. So let us take 2-3 more points here. Take 2-3 more points here. Suppose I draw a line with it. I draw axis first of all. This x-axis, this y-axis, right? So you got x and y-axis. Suppose I draw a line parallel to x-axis. Now tell me, this line and x-axis are parallel. These lines are parallel to each other because ये line इसको कहीं पर भी intersect नहीं कर रही है x-axis को. They are parallel lines. तो बताइए फिर इस लाइन का और इस लाइन के बीच पे कितना एंगल होगा? 0 degree. 0 degree. 0 degree. 0 degree. इक्वेशन कितना हो गया? 0 डिग्री का हो गया. मतलब थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री का हो गया. तो स्लोप कितना होता है? tan थीटा होता है. ये tan 0 हो गया. कितना आया स्लोप? 0 आ गया. 0. Point is that when line is parallel to x-axis, their slope is 0. Line can be drawn here, it can be drawn here or here or wherever. When they are parallel to x-axis, the slope is 0. Okay, you understand that? All? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Now the other point. Line is parallel to y-axis. Now here I can add one more point. जो line axis x के parallel है. Who is doing this? Yeah. जो line axis x के parallel है, वो axis y के perpendicular, And right?
तो जिसका इंक्लिनेशन x एक्सिस से 0 होगा उसका इंक्लिनेशन y एक्सिस से 90 हो जाएगा. Fine. All right. So always remember, whenever line is either parallel to x-axis or perpendicular to y-axis, उस लाइन का स्लोप हमेशा 0 के इक्वल होता है. उस लाइन का स्लोप हमेशा 0 के इक्वल होता है. Is that clear to you all? Sir. Yes, sir. You all understand? Yes, sir. Right. The second condition, line is parallel to y-axis. बताइए इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा? 90 degree. 90 degree. 90 degree. और इसका स्लोप कितना होगा? Not defined. Not defined. Defined. So the point to make line is perpendicular to y to x axis or parallel to y axis. Slope is undefined. Undefined. Right. And then the previous Yes, point sir. was please be quiet there. And the previous point was when line is below Parallel to parallel to x axis perpendicular to y-axis. Perpendicular to y-axis. Y-axis. The slope of the line is 0. The slope of the line is 0. The slope is 0. Slope is 0. the slope is 0. Tell me till here कौन मेरी बात को समझ गया? कितनों Yes, को sir. कितना टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. I hope this is all clear. किसकी बात पीछे से आ रही है इतनी? Who is this fellow? So my point is that whenever we have the cases of inclinations and slopes and all, another point I want to make here is that किसी भी लाइन की इक्वेशन बिना स्लोप फाइंड आउट करे हम नहीं निकाल सकते हैं. तो जितना हमको पढ़ना है अपने सिलेबस में, we need to have the slope of a line to find the equation always. Understand? Anyway, I'm stopping it here today. सब लोग पहले बुक से इतना पढ़ के रखिएगा. 14th B exercise का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन आपके होमवर्क में. फर्स्ट क्वेश्चन आपको एंगल गिवन है, स्लोप निकालना है. सेकंड आपको इंक्लिनेशन भी निकालना है, स्लोप गिवन है. थर्ड क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2 और स्लोप फाइंड आउट करना है y2 minus y1 upon x2 minus x1 से. एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन आपको AB लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको AB के पैरेलल लाइन का स्लोप निकालना है. ना यू नो दिस, जो लाइन पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो आप AB का स्लोप निकालिए, वही उसके पैरेलल लाइन का स्लोप हो जाएगा. राइट. देन द फिफ्थ क्वेश्चन आपको AB की परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो आप AB का स्लोप निकालिए, उसको m1 मान लीजिएगा. फिर द रिलेशन इज m1 m2 इक्वल्स टू -1. m2 कितना हो जाएगा? -1 upon m2. -1 upon m1. आपके पास परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? सब बताइए. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. बोलिए आवर्धन, बोलिए. Sir, can I leave the meeting? What? Sir, can I leave the meeting? Of course you can leave the meeting. So whenever we got two lines, one is perpendicular to the other line, then the slopes are always like, so we should find a slope of AB first of all, और जो AB का slope आएगा उसको आप m1 मान लीजिएगा, m1 m2 equals to -1 और वहां से m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा. राइट. ठीक है. The sixth question, you Yes, got sir. points 0, 2, -3, -1 and other point 1, 5, 4, A. M1 निकालिएगा फर्स्ट 2 पॉइंट से, M2 निकालिएगा सेकंड 2 पॉइंट से,
and put m1 equals to m2 and can get the value of a from there. Okay, all right. Yes, sir. Seventh question. You got Yes, point sir. minus 4 comma minus 2 and 2 comma minus 3 is perpendicular to the line. So you got two lines here. You got two lines here. One line is this. हमको इसके दो पॉइंट्स ये रखे हैं -4 comma -2 and 2 comma -3 और इसके पॉइंट्स हैं a comma 5 and तो इससे तो m1 निकालिएगा -2 plus 3 upon -4 -2 1 upon -2 है क्या 1 upon -2 है ना ठीक है फिर m2 फाइंड आउट करिए फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स -1 -5 upon 2 -a and it is -6 upon इन दोनों को लाइंस कैसी हैं परपेंडिकुलर हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 इक्वल्स टू -1 सॉल्व कर लीजिएगा a की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व टुडे टिल 7th क्वेश्चन बाकी काम कल करेंगे बच्चों कल आपको मुझे असाइनमेंट Okay. दिखाना है मैथ्स का राइट Yes, sir. एंड Yes, sir. Yes, sir. एंड लिसन टू मी संडे को टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट प्रिपेयरिंग Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. understand all Yes. start Yes, prepare the test of trigonometry. I'll take it on Sunday as we've done before. We will do in the same manner and try to be prepared for that. And tomorrow, going to show the assignment of word problem, first 50 solutions. Understand? Yes, क्योंकि sir. कल Yes, काम नहीं sir. करेगा is going to be a problem. आपको भी सारा काम दिखाना है एंड मैं किसी भी क्वेश्चन की आपसे पिक्चर मांग सकता हूँ अंडरस्टैंड तो Yes, sir. please remember you got